Patel. We are still joined by our expert guest, Dr. Hiraman Tiwari, Professor Indian Culture and History at the Jawaharlal Nehru University, and Praful Ketkar as well, editor organizer. Praful Ketkar, if I could come to you and ask to you about how well thought do you think is this initiative, Run for Unity or Unity Run, which well just tells us how the spirit of Sardar Vallabhbhai Patel is being taken forward by the initiative of the government and the participation of people, and we saw how energetic and strong participation was at the launch that was flagged off by the Home Minister at the Dhyan Chand Stadium in Delhi, and these events are taking place nationwide today. We remember Sardar Patel as the unifier, as the person who brought all these different parts of India together, and whatever in the form, that geography that we see today, the borders we see today, it is thanks to his efforts. But how to carry forward that legacy. So I thought that the way Prime Minister Modi conceptualized this entire idea of Statue of Unity and then this run for unity. Statue of Unity was conceptualized as not just as an highest statue, or it is, it has a wonderful museum depicting Sardar Patel's life there. But the way, the metal from entire country, from each and every community brought together, and then through their contributions, I remember the first program that was organized in Arunachal Pradesh, in far east corner of India. So every person, every community, every state felt as if they are contributing to this. The highest statue that is being built of Sardar Patel, and that's why Statue of Unity itself could become a symbol of Indian unity. That time, many people were mocking this idea. Who would go there? A far fetched corner of Gujarat, and where connectivity itself was a difficult task. Today we see more than 2.5 crore people visited the statue, and it has become a very very iconic kind of place. I would say not just of tourism but also sort of pilgrimage, remembering the contribution of Sardar. So Ekta Daud is the continuation of that. If that spirit, generally we are, take that spirit together on our Republic Day or Independence Day. But I believe if there is a sense of unity that needs to be underscored, and unity not just as a political unit, but realizing that culturally we are one. The differences that we see are very superficial. Our diversity is the manifestation of inherent unity. Realizing that, I think this unity run, or now the unity march that is going to take place, common people are going to participate as contingents and taking resolve for the unity and integrity of nation. I think that is really carrying forward Sardar Patel's legacy. In that sense, I feel that to make you realize that we are one, we are working for the same cause, for the same nation, and we have certain common goals. To make that Yes. realization, I think this is the best day and best occasion, October 31st, as Sardar Patel's birth anniversary. Yes, taking that point forward, Professor, do you agree that the Run for Unity is an initiative that symbolizes unity, which Sardar Patel really stood for, because people cutting across communities, caste, religions, they all participate in this run. And also, just to quote Sardar Vallabhbhai Patel, he said once, every Indian should forget that he is a Rajput, a Sikh or a Jat. He must remember that he is an Indian. So these are all Indians running in the run for unity. So again, a message of unity, a message of standing against anything that comes in the way of India's integrity, territorial integrity and sovereignty. This is, as just Prabhulji said, that this unity that we talk about, and it was, of course, you have to marvel at the vision of the Prime Minister, who was then not a Prime Minister, was Chief Minister of a state, Gujarat,
who thought of this entire idea. That's why the place is called the Ekta Sthal. So there is another very poignant mantra that was chanted briefly in Delhi when Home Minister Amit Shah ji was flagging off that unity rally or run for unity. Samano mantraha samitihi samani. There's another word for ekata in Sanskrit called samana. And as Prafulji just said, that the diversity is something which is to be celebrated, but ultimately what is important for the spirit of this country, for this nation, this civilization, is unity, is samanata. And therefore, Sardar Patel, and you also got the answer when he was called Sardar and why he was called Sardar, because this was actually well before the independence that he had started this campaign, this movement, how every section of the society should not only be celebrated but also encouraged and nurtured. And the farmers' protest at that time, Kisan Satyagraha that happened, which brought out the real capacity and vision that Sardar Patel had, and he got this title. But then the work was not even begun at that time, and therefore at the time of independence, when the entire world knew, and particularly the colonizers, the British rulers knew how they had worked in the country, which was a one country, remains one country, had created fissures and divisions. So this cliche that people say divide and rule was not just a cliche. It was work on the ground, and Sardar Patel understood that, and that therefore one by one he worked towards, again, if you like, reuniting. There was a unity, but this diversity, as Prafulji just said, that is a manifestation of oneness. Eko ham bahusyama, and that spirit, that civilizational ethos and value that India encompasses was celebrated, nurtured, and encouraged. And he worked hard, Sardar Patel worked hard to achieve that unity. There was, the Home Minister also mentioned in his speech, that there was one ticklish issue that had left, that was Article 370, but under the leadership of Prime Minister Narendra Modi, that was also sorted out 6-7 years ago. And therefore, you know how important it is for India to be one, to be samana, to think like one, and therefore run for unity. Celebration of the Ekata Diwas on his 150th birth anniversary, 150 years ago, the person who was born, and how he has worked tirelessly until his last breath, facing all kinds of hurdles and impediments, and did his work with dedication. And today we are here. Most of us, at least none of us has seen how he actually looked like. We know and see him on television, in the films. But the kind of work that he has done will be celebrated for thousands of years, because again, another very nice phrase that was used by the Home Minister was that he actually crafted the modern map of India. In other words, the map had to be arranged. Yeah. The unity remained there, and therefore this unity that we have been celebrating for 75 and 78 years, after the colonizers left India, after we got independence, and that the work during that independence movement and afterwards when he was Deputy Prime Minister and Home Minister, whatever the work he did was absolutely remarkable. It is also true, and most of us believe very firmly, that the acknowledgement, the credit that he deserved was not granted to him all these years until 2013, 2014, when in the center, 2014, a new government came under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. That he has been now celebrated, and his work, his ethics, Yes. has been highlighted, and we all know many things that most people did not know. So these programs are extremely important for India to know what kind of Deputy Prime Minister and First Home Minister we had, who worked so tirelessly, dedicated his entire life.
He gave up his profession of being a barrister. He could have lived a very happy life and comfortable life like many others did. But he worked for the country because he knew the unity of country has to be re-underlined and re-established and celebrated. Yes, and certainly that is a message that is even being taken out today as well, re-establishing and renewing that message of national unity. It is very, very much required and being carried forward even today. Let's just play out for you or put out for you what Prime Minister Modi has put out on this occasion on social media. I quote him here: India pays homage to Sardar Vallabhbhai Patel on his 150th Jayanti, which is birth anniversary. He was the driving force behind India's integration, thus shaping our nation's destiny in its formative years. His unwavering commitment to national integrity, good governance and public service continues to inspire generations. We also reaffirm our collective resolve to uphold his vision of a united, strong and self-reliant India, unquote. So, united, strong and self-reliant, it's all been strung together there, Praful Ketkar, and it takes us back to how renewing this message of unity remains relevant even today, because we do still have challenges in the country, both internal and external, and this keeps reminding us that we still need to combat them. Absolutely. Gautam, see, most of the challenges that we see today, Sardar Patel could visualize them. Whether in terms of radicalism, whether in terms of Naxalism, whether in terms of, changes in bordering areas, whether external interventions and the implications of, the geostrategic changes globally, our defense preparedness, our relationship with countries like China and Pakistan, all these things he could visualize. Unfortunately, he didn't get much time after independence to see the journey of independent India. But within that period also, I remember, the letter he has written on 7th of September 1949, specifically related to Tibet, to the then Prime Minister Pandit Nehru. And he is clearly stating that, see, by recognizing Tibet as integral part of China, you are making a big mistake. You are virtually bringing China on our borders. Our eastern borders will not be safe. But more importantly, he was saying that you are giving a gateway to the revolutionary communist uh, forces who can virtually get training and help from China, and it can create internal disturbance. So he could visualize, the threat of violent Maoist ideas can disturb India's internal security in 1949. On majority minority question, again, during the Constituent Assembly debate, he was very, very clear. So, when Prime Minister writes that, the united, strong, and self reliant India, he had a clear vision about it, simply because he had a clarity about what India stands for in the past, how India attained independence, and how India should move ahead. So when the question of partition, I don't remember. Professor Tiwari can correct me if I'm wrong, but he was perhaps the only person, even not people who were propounders of Hindutva could use those kind of words, when he said, till yesterday you were voting for Pakistan. How can we take the things granted today when you decided to stay back in India? And he's saying this immediately after partition, immediately after independence. So he was very, very, he was very truthful, diplomatically very sharp. He understood the internal and external dynamics of post-independent India very, very critically. But while doing that, he had an impeccable character. We today we don't know. His family members did not, automatically become a dynastic rulers for sort. We don't see much of people, when it comes to the integrity at personal level. He has always put
earlier than organizational interest and national interest above his personal interest. There were opportunities for him to virtually lead Congress at least thrice as a president in 1929 and then in 1937 and then 1946. His due credit and due was denied to him, but still he never became a rebellion. For him, the cause was more important. The freedom struggle was more important, not his personal position. That clearly characterizes Sardar Patel. And Certainly, we, certainly. how can we reconnect with that? How can we imbibe those qualities? And that's why this run for unity becomes very important. Certainly. What you mentioned about, that letter on China to Pandit Nehru, Dr. Hemant, I just wanted to ask you because I don't think a lot of people know about it, and it's worth talking about it as well. To what extent? I mean, we know about Sardar Patel, how he, brought India together, his role in the freedom struggle. But to what extent was India's foreign policy also influenced by Sardar Patel and his line of thought? Foreign policy post-independence and foreign policy now, especially since 2014, because we talked about a lot about non-alignment earlier, and now it's mostly strategic independence. Gautam, it's an excellent question, and I think I'm not an expert in international studies. Prafulji certainly is, but looking but you know at your history. No, he was very particular about, although he had differences, very clear differences with the then Prime Minister, his boss at the time, but he did not become a rebellion. That is the most important factor, because which is why Ekta becomes extremely important. He sacrificed not only his personal prosperity or happiness in life, but also emotions in order to see that India remains one. But he was very straightforward, particular when he writes clearly what might happen if this is done. That is the case of Tibet. And if you analyze the last 7 decades, you know how right he was. What kind of disturbances we have right in the east of our east part of India. So that he visualized, he had the capacity and vision to see what might happen. And that is what is called in Hindi Doordarshita, that far-sightedness that he had, but he always has in his heart the unity. That he was treated not as he should have been treated, has been not written much, but perhaps, as you said, since 2014, much is being written. His role, his place in history, Indian civilization, excuse me, is being underlined by the fact that despite all this, he remained loyal to the nation, to the unity, to Samanata of this country. How he was denied his due is I don't know, is baffling to see why such a great man should be feared by a confident and celebrated Prime Minister at the time. One doesn't want to get into that kind of history because it's a beautiful day today. It's a unity day. How his daughter was treated after he was no more with us in the country. All these things are for historians and political scientists to analyze. But yes, because he visualized what China might do, what the ideology present in China might affect, how it might affect India and Indians, it is very, very clear. And similarly, how the neighbors should remain in contact with this country. And because Pakistan was carved out. So I'm saying that this unity which is inherent in this country, there was already a particular example, a very big example, a bloody example that this country was divided. And therefore, the unity became extremely important for him. And that is the vision, that is the inspiration that drives today's Prime Minister and rulers, how we need to celebrate that. Just imagine have happened, because that is why also, as Prafulji mentioned, that he would clearly say a couple of years after the independence that it is baffling somebody who voted for secession, for severing this country, cutting this country out, and suddenly now being part of the united country, united or reintegrated, as the Prime Minister mentioned in his post, that there was always a question. So he was very forthright, very upfront,
and he would analyze the issues as they were. So he was extremely sharp and an intellectual person. Right. Taking this forward, you had made an interesting point, I would agree with Gautam, on Tibet, and perhaps if he would have been India's first Prime Minister, then things would have been different on the Kashmir issue, maybe economically as well and strategically too. You know, other than Tibet, another interesting facet of history is how Sardar Patel had opposed the payment of 55 crore rupees to Pakistan, which was Pakistan's share in the distribution of assets and liabilities, because he feared that Pakistan would use that money to finance its military aggression against India, and he wanted the Kashmir issue to be settled first. But the payment happened because of the fast unto death by Mahatma Gandhi, because he felt that if this were not to happen, then communal tensions would further worsen. So how do you see, you know, that moment, and because that was also the time around which Gandhiji's assassination happened. So, but Sardar Patel did stick to his view that that money should be withheld, though of course he accepted the final decision of Gandhiji, and later the cabinet decided to release the funds. So, how do you contextualize that in terms of the national interest that Sardar Patel had always given precedence to? Are you asking me or Prafulji? No, I'm asking Prafulji. Munmun, like this later on Tibet, there was small cheat that Sardar Patel had written when Pandit Nehru was going to All India Radio and going to announce a sort of ceasefire and a decision to approach United Nations on Jammu Kashmir issue. Remember, this was the same October month, 22nd October 1947, when Pakistan had already done first sort of intrusion, illegal intrusion in the territory of Jammu and Kashmir. On 26th of October, there was instrument of accession that was signed by Maharaja Hari Singh, and after that, there was an immediate counter from Indian side. What we have seen after that for next 1 year was a remarkable journey, because Sardar Patel was trying to take Jammu Kashmir like many other parts of India. He was very keen about Goa also for that matter, but he was trying his best, to steer the affairs of Jammu Kashmir also on the same line. He made a clear-cut prediction about Sheikh Abdullah that he can't be trusted. But unfortunately, when it comes to Jammu and Kashmir, Mr. Nehru was very, very sensitive. He thought that he understood Kashmir much better than him. So the small chit that he sent when Pandit Nehru decided to announce the plebiscite and the decision to approach United Nations, he just wrote one chit: please don't do that. And when he got back the message that Mr. Nehru has already reached the studio and he's making the announcement in a few seconds, and he just uttered a word, and it is recorded: Jawahar bahut pachtaega. What happened to Jammu and Kashmir? As Professor Tiwari said, far-sightedness. He was such a visionary. The same was about this 55 crore rupees. See, we had a very, very bloody kind of partition. What we have seen in terms of distribution of resources, we accepted certain formula. But what Sardar Patel, and it was not just Sardar Patel, it was a popular national sentiment that time, and also it was almost a unanimous cabinet decision where Sardar Patel vociferously argued, and if I'm not wrong, on the same in the same cabinet meeting, the decision to use force in Hyderabad was already taken. There was a lot of debate about it. But regarding this 55 crore rupees, he was very clear that we should not allow enemy to use these resources for fueling war. Giving this money at that particular time would simply mean weaponizing Pakistan, weaponizing the enemy to actually
impose war on us, which we never wanted. So his ideas were very clear. Gandhi, on the other hand, thought that if we give this 55 crore, perhaps Gandhi being Gandhi, a very saintly person, he perhaps believed that Pakistan can be persuaded to not to follow the path of promoting war and terrorism. It was in a way a first act of terrorism from Pakistani side, what we call cross-border terrorism today. Uh, uh, Sardar Patel had a fear that we would be indirectly helping Pakistan through this money to promote this kind of act. So, as I said, when it comes to national security and integrity, he had a very, very clear vision. Civilizationally, also, he had a very clear vision. Uh, I don't know if it wouldn't have been Patel with K. Munshi or Kanayalal Manakalal Munshi was a famous literary and another visionary who wrote about India's cultural history. If they would not have been there, whether Somnath temple would have been reconstructed because it was their resolve. Again, he was very, very, not just far-sighted, forthright, and very clear Yes, about his ideas. Right, sorry for that interruption, but we're getting images from Kevadia, Ekta Nagar now. Prime Minister Narendra Modi leading the celebrations, the process of saluting India's Iron Man, Sardar Vallabhbhai Patel, at the Statue of Unity. You can see floral tributes being paid and almost a worship of Sardar Vallabhbhai Patel there. the nation is celebrating. So, Prime Minister Narendra Modi paying his tributes to Sardar Vallabhbhai Patel, India's first Deputy Prime Minister as well as Home Minister, on the occasion of his 150th birth anniversary. It's a day that is being celebrated across the country as National Unity Day. Sardar Vallabhbhai Patel's statue is the world's tallest statue. It stands at around 182 meters. It was inaugurated in 2018 by the Narendra Modi government. Prime Minister Narendra Modi paying his tributes to the Iron Man of India, who had earned the sobriquet of Sardar in the pre-independence period. Yes, quite a momentous day, 150th birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. And this is the venue where the biggest celebration has been planned and will unfold very shortly. There will be a parade, a grand parade, a pledge will also be administered by Prime Minister Modi. And this is the start of the events of the day as far as Ekta Nagar Kevadia in Gujarat is concerned. Prime Minister Modi paying floral tributes to Sardar Vallabhbhai Patel at the feet of the Statue of Unity, the tallest statue in the world, which has a story of its own in terms of how it came about. Contributions of iron tools from farmers from all over the country went into forming this statue, 182 meters tall. As Munmun mentioned, it's a symbolic number really, connecting to the number of assembly seats that the state of Gujarat has. And it was a project that was conceived and then brought to fruition by Prime Minister Modi himself, even before he became the nation's Prime Minister in 2014, because he was Gujarat Chief Minister prior to that. The work was in fact initiated while he was still Chief Minister in 2013 and completed in 2018.
an imposing statue, the tallest statue in the world, dwarfing the hills around it and overlooking a wonderful vista of the Narmada River in the Narmada district of the state of Gujarat in India. Yes, this stands on the Sadhu Bhet Island in the Narmada River near Kevadia, overlooking the Sardar Sarovar Dam. And this location was chosen as a tribute to Sardar Vallabhbhai Patel, the Iron Man of India. The dam, which is the Sardar Sarovar Dam, was a project envisioned by Patel, symbolizing his vision and contributions to the nation. So, the statue, as you can see, towers over the river and the dam, and it offers a dramatic backdrop of the Satpura and Vindhyachal hills, making it a symbolic site that commemorates Patel's legacy of unity and strength. Like Gautam was saying, the iron used in the statue was partly sourced from recycled farming tools that were donated by the Indian farmers, and that adds to the symbolic connection of the statue to the people of India. There's a bridge that makes this particular statue accessible. The site becomes accessible through a bridge from the mainland. The statue was inaugurated on Sardar Patel's birth anniversary, the 31st of October 2018, and it emphasizes his dedication to national unity. Just to let you know that the Statue of Unity has high-speed elevators as well that can take you up, if you go there, to a height of 153 meters. Each lift can carry 26 people up there, and takes a little over 30 seconds to get there. And then you can look all around, drink in the surroundings literally of the hills as well as the Narmada River. So, this is also going to be the venue for the main parade celebration, and that is of course Ekta Nagar, where the Prime Minister is in Narmada district of Gujarat. There will be an air show by the Indian Air Force's Surya Kiran team. There will be a parade, and there are special key attractions this time around. There are many firsts as well. There are 16 marching contingents from 9 states, 1 Union Territory Police. There's going to be 4 Central Armed Police Forces, NCC cadets, and like our reporter Meghna was reporting earlier in the day, special segments would be there, like a BSF dog squad that will be marching. Also, Assam Police motorcycle display would be there. A BSF camel contingent and band will also be present, and the Guard of Honour will be presented to the Prime Minister, and that will be led by a lady officer. And there will be tableaus as well, at least 10 of them is what we're being told. The one from Gujarat, of course, all about the legacy of Sardar Vallabhbhai Patel. So, floats representing different states and union territories under the theme of unity in diversity is what we are going to see. Large cultural program, there will be around 900 artists that will be performing and showcasing Indian classical and folk forms. And there is going to be an extended India festival, or the Bharat-Parv, from the 1st to the 15th of November. Ekta Nagar, where the Prime Minister is, will be hosting Bharat-Parv, and that will feature cultural performances, a food festival from different states. This festival will only culminate on the 15th of November, and there will be special programs like celebrating God Birsa Munda Jayanti, highlighting the glorious culture and resilient spirit of our tribal communities. There will be other highlights as well, like of the Run for Unity Marathon in Delhi from Rajghat to Red Fort, with persons of disabilities, students and CAPF etc. participating. And of course, yesterday we saw the Prime Minister inaugurating and laying the foundation stone of infrastructure projects in order to give a push to tourism and green mobility in Ekta Nagar. Okay, we have our guests still with us, Dr. Hiraman Tiwari, Professor, Indian Culture and History at the Jawaharlal Nehru University, and Praful Ketkar, Editor-Organizer. If I could come to you, Praful Ketkar, just tell us, as Prime Minister Modi has just paid homage and saluted Sardar Vallabhbhai Patel, how important is it to, for a country like India, which has had so much struggle in its past, has been divided, has struggled for its independence, and then emerged as, well, an emerging economy, which is already among the largest in the world, the 4th largest really, in the race for the 3rd as well.
and aspires to be a developed nation by 2047 when it completes 100 years of independence, to recollect the kind of contributions that people like Sardar Vallabhbhai Patel have made to India's struggles, its aspirations of greatness. See, Gautam, what happened? The colonization and the invasions, did not exploit us just economically, but also, politically, socially, and culturally, actually subjugated our minds. So our sense of history, our belief in selfhood was completely crushed, and that's why we also started believing that perhaps we were never a one nation. We never had actually about the idea about nationhood. We never knew perhaps how to govern a country in economic terms. Perhaps we were never a prosperous country. Education wise, we were perhaps illiterate. Come on, before arrival of British, we had more than 25% of share in global GDP, and it was not because of just agricultural production. Most of our exports were in garments and metallurgy. So that because We had we universities when developed that self universities were belief. unheard of in any part of the world. Yeah, Absolutely, absolutely. Takshila, Whether Nalandas Nalanda. and Takshashilas and Vikramshilas, so and it was like not small universities. They were like international universities where international students used to come and learn. So having that self belief was a precondition. That's why I briefly mentioned about the experiments like what Sardar Patel tried to do with Somnath. So he was not, adverse to the ideas of having modern technology or modern industrialization or, modern temples, as Nehru would like to call, Sardar Sarovar Dam. But what he was very clear that unless we are clear about what we are civilizationally as a nation, if we are not clear about it, these material things would not fall in place. They have to go hand in hand. And that makes, Sardar Patel different. And perhaps that is the reason why Prime Minister Modi is so particular about giving Sardar Patel his due. Because whenever, India's temples flourish, India's economy has flourished. That has been the history. Whenever India's, culture unity has strengthened, India has done very well when it comes to the political and, the strategic security. So all these things are interconnected, and this interconnectedness, Sardar Patel understood very, very well. And that is perhaps the reason why we need to revisit Sardar and his legacy when it comes to, administration. He was not against decentralization. He was such a, committed Gandhian. But when it came to deciding the unitary features of Indian Constitution and our administrative services, he was very, very particular that today when we are just partitioned, and we need a strong administrative service, what used to be called as the civil service then. While conceptualizing in an police academy in Hyderabad, and what role that police should have, again a very unitary kind of feature when it comes to the Indian police service. He was very, very particular that if this unity has to be maintained and realized, certain things have to be unitary in nature, and certain things can be. So the journey that we have made in the last 75, 78 years, especially after the, when we enacted and adopted our constitution, it is a remarkable journey. Many a times we do not appreciate and understand that no other country, have made such a remarkable mark after facing colonization for, many centuries, and that's why people like
केंद्रीय पुलिस बलों के ये ध्वज जो हमारे तिरंगे की सच्ची ताकत है। पूज्य सरदार के अखंड भारत के विचार एवं माननीय प्रधानमंत्री जी के संगठित भारत के जज्बे को हिंदुस्तान के सीने में जिंदा रखने हेतु संकल्पबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नारी सशक्तिकरण के संकल्प की प्रेरणा से इस वर्ष एकता परेड का नेतृत्व नारी शक्ति द्वारा किया जा रहा है, जिसमें शपथ परेड की कमान संभाली है गुजरात काडर की युवा IPS SP सिमरन भारद्वाज ने। और अब मां भारती की जाबाज बेटियां शक्ति का सच्चा स्वरूप राष्ट्रीय एकता परेड में लगातार चौथी बार राष्ट्रीय ध्वज रक्षक टोली का बड़े गौरव से नेतृत्व कर रही है। इस टोली की कमान संभाली है सीमा सुरक्षा बल की युवा अधिकारी असिस्टेंट कमांडेंट डॉक्टर मृदुला ने। राष्ट्रध्वज के आगमन पर हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और वर्दीधारी सैल्यूट करेंगे। आइए खड़े हो जाएं। संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता एवं विकासशीलता से विश्व में हमारा भारत महाशक्ति की तरह उभर रहा है और इस सशक्त भारत की पहचान है एकता एवं अखंडता। इस एकता को मजबूत बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। इस उद्देश्य को चरितार्थ करते हुए अखंड भारत के प्रेरक पूज्य सरदार की जन्म जयंती को एकता परेड के रूप में मनाने का निर्धार किया हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने। तो आज इस एकता परेड पर यहाँ उपस्थित सभी के साथ पूरे भारतवर्ष को एकता की शपथ दिलवाने के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय अनुरोध करते हैं। दर्शक दीर्घा में उपस्थित हम सभी शपथ की मुद्रा में खड़े होकर दाहिना दांत आगे करके शपथ दोहराएंगे। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे
सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। राष्ट्रीय ध्वजरक्षक तलाक थमकर बादशाह बदलकर बन चल। हवाओं को सुनाते भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। इन ध्वजों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता उन्हें कर्तव्य की राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बलिदान, शौर्य और पराक्रम की कहानी कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है और देश की एकता और अखंडता के खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर करते रहे हैं। गुजरात पुलिस नेतृत्व में ध्वजवाहक अब प्रस्थान करते हुए
सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार इनके पृष्ठभूमि में दिखाई दे रहे हैं। आज एकता परेड पर एक विहंगम दृश्य हम सभी के समक्ष। देवियों और सज्जनों, यह बहुत ही सुंदर संयोग है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती वर्ष तथा भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना भी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा 150 वर्ष पूर्व ही की गई थी। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर से आए 100 कुशल वादक शंख, नगाड़ा, तुतारी, रणसिंघा, ढोल, शहनाई, तबित नादास्वरम, तारपा, ताशा और करताल जैसे भारतीय वाद्य यंत्रों से वंदे मातरम की धुन बजाते हुए इस वातावरण को गुंजायमान करेंगे। इस अद्भुत प्रस्तुति का संचालन श्री लोकेश आनंद एवं प्रद्युत मुखर्जी द्वारा। आज की एकता परेड में सर्वप्रथम हम सभी के समक्ष गर्व से आगे बढ़ते सीआरपीएफ और बीएसएफ के रणबांकुरे इन वीरों में आगे सीआरपीएफ के शौर्य चक्र विजेता बहादुर, जबकि उनके पीछे चल रहे हैं सीमा सुरक्षा बल के जांबाज प्रहरी जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वीरता की अद्भुत पराकाष्ठा रचते हुए वीरता पदक से अलंकृत हैं। सीआरपीएफ के पांचों शौर्य चक्र विजेताओं का नेतृत्व कर रहे हैं श्री विक्रांत कुमार, डिप्टी कमांडेंट सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के इन वीरों को क्रमशः नक्सल प्रभावित राज्य में उच्च कोटि की तथा जम्मू व कश्मीर में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए सम्मानित किया गया है। और अब बीएसएफ के जांबाज सीमा प्रहरी जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में वीरता के लिए पुलिस पदक से विभूषित किया गया, इन बहादुर सीमा प्रहरियों का नेतृत्व कर रहे हैं डिप्टी कमांडेंट रविंद्र सिंह राठौड़। ऑपरेशन सिंदूर में सीमा प्रहरियों ने जो वीरता का इतिहास रचा है उसे राष्ट्र ने सराहा और सम्मानित किया है। हमें गर्व है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा सुरक्षा बल के वीर प्रहरियों को 2 वीर चक्र तथा 16 वीरता पदक से अलंकृत किया गया और इस समय ये पदक विजेता हम सभी के समक्ष।
देवियों तथा सज्जनों, कृपया बाईं ओर देखें, जहां से एकता परेड 2025 का शुभारंभ हो चुका है। उल्लेखनीय है कि इस बार के सभी फुट कंटिजेंट्स का नेतृत्व देश की बेटियां कर रही हैं, जो नए भारत की आन और नारी शक्ति की पहचान है। परेड तीव्र गति से आगे बढ़ती हुई और नेतृत्व संभाले हैं 2021 बैच की भारतीय पुलिस सेवा गुजरात काडर की युवा अधिकारी एसपी टेक्निकल एंड SCRB सुमन नाला, IPS गुजरात पुलिस। बिट्स पिलानी से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री रखने वाले सुमन नाला ने अपने छोटे से सेवा काल में बनासकांठा के आदिवासी समाज के 300 से अधिक लोगों के पुनर्वास में अहम भूमिका निभाई है। और अब सबसे पहला दस्ता सीमा सुरक्षा बल का सुरक्षित सीमाएं समृद्ध राष्ट्र और जीवन पर्यंत कर्तव्य की अवधारणा के साथ बढ़ता। इस दस्ते की कमान संभाली असिस्टेंट कमांडेंट मोनिका लाकड़ा ने। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सुरक्षित रखने के प्रति कटिबद्ध और एकता परेड के आयोजन की जिम्मेदारी निभाने वाला सीमा सुरक्षा बल। अगला दस्ता BSF बैंड का। धुन हम सीमा के प्रहरी हैं, हम सीना तान खड़े। कमान संभाले बैंड मास्टर इंस्पेक्टर राधेश्याम बैरवा BSF। और अब अत्यंत कठिन हिमालय क्षेत्र और बर्फीले इलाकों में तैनात रहते हुए देश की सुरक्षा में सदैव तत्पर रहने वाले ये हिमवीर है ITBP, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा के साथ अग्रसर। ITBP का दस्तारी कमान संभाले है डॉक्टर परमजीत कौर, डेप्यूटी कमांडेंट। और अब देश के औद्योगिक, आर्थिक और सामरिक संपत्तियों की सुरक्षा में सदैव अग्रणी, राष्ट्र की अखंडता और विकास यात्रा में संरक्षण एवं सुरक्षा के ध्येय के साथ देश के औद्योगिक प्रगति के प्रहरी, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात CISF का दस्ता। कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट कीर्तना कुरपाटी ने। हिंदुस्तान मेरी जान की धुन बजाता आगे बढ़ता CISF का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाली है सब इंस्पेक्टर करण सिंह राज पुरोहित ने। शांति, सुरक्षा और न्याय की स्थापना के लिए निरंतर प्रतिबद्ध तथा भारत के संघीय ढांचे की दृढ़ता और जनता की सुरक्षा के प्रति समर्पण का प्रतीक आंध्र प्रदेश पुलिस। इस दस्ते की कमान संभाले हैं डॉक्टर श्रीवेदा गुरुगुवेली DSP ने। सेवा और निष्ठा के आदर्श के साथ मंच की तरफ अग्रसर CRPF का दस्ता। कश्मीर से कन्याकुमारी और पूर्वोत्तर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों तक राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा में सदैव तत्पर CRPF। इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट सालवी राठी ने। CRPF दस्ते के ठीक पीछे देश के हम रक्षक, ये जोश भरी धुन बजाते अग्रसर हैं CRPF बैंड का दस्ता। कमान संभाले इंस्पेक्टर शमशेर लाख। और अब गर्व से सलामी मंच के समीप पहुंचा असम पुलिस का दस्ता। जनहित जन सेवार्थ का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस, राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले हैं DSP मधुस्मिता डेका। असम पुलिस के ठीक पीछे SSB के ये जवान भारत की नेपाल और भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सशस्त्र सीमा बल अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अनुरूप कार्य करते हुए। और इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया यादव ने। SSB दस्ते के ठीक पीछे जोश भरा है सीने में की धुन बजाता आगे बढ़ता ASB का बैंड दस्ता, जिसकी कमान संभाले है बैंड मास्टर हेड कांस्टेबल महाजन कैलाश माधव राव।
और अब मंच की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़ पुलिस का दस्ता। नक्सलवाद उन्मूलन अभियान के लिए 2024 में राष्ट्रपति के कलर से सम्मानित। परित्राणाय साधु नाम के आदर्श के साथ तीव्र गति से अग्रसर। कमान संभाले डीएसपी गरिमा राघव। साहस और बलिदान के आदर्श वाक्य को आत्मसात किए अग्रसर जम्मू कश्मीर पुलिस का दस्ता। राज्य में आतंकवाद रोकने में सक्रिय भूमिका निभाने वाली तथा राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को सुदृढ़ रखने वाली जम्मू व कश्मीर पुलिस नेतृत्व कर रही है डीएसपी नादिया फारूक। और यह है जे.एंड.के पुलिस का बैंड दस्ता, जोश भरी धुन बजाता आगे बढ़ता। नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई राजेंद्र कुमार। और अब आ रहे हैं सद्भावना, सेवा और सुरक्षा की भावना के साथ पंजाब पुलिस के ये रणबांकुरे। अपने आदर्श वाक्य शुभ कर्मन्ते कबहू न टरू अर्थात सत्कर्म से कभी नहीं डिगना के संकल्प को चरितार्थ करते हुए अग्रसर पंजाब पुलिस। कमान संभाले हैं एएसपी गजलप्रीत कौर आईपीएस। अब तीव्र गति से मंच की ओर अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस। मध्य प्रदेश पुलिस का ध्येय वाक्य है देशभक्ति जन सेवा, जो इसकी कार्यशैली और समर्पण को प्रदर्शित करता है। यह पुलिस बल राज्य में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ समाज में शांति और सद्भावना स्थापित करने के लिए कटिबद्ध है। कमान की इस दस्ते की कमान संभाली है डीएसपी निधि राजेश दंडोतिया द्वारा। मध्य प्रदेश पुलिस दस्ते के ठीक पीछे जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये धुन बजाता अग्रसर मध्य प्रदेश पुलिस का बैंड। इस दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं बैंड मास्टर एएसआई खूबेलाल। और अब मंच की ओर अग्रसर उड़ीसा पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श वाक्य सेवा और सुरक्षा को हर दिन चरितार्थ करते तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्यों के लिए सदैव प्रतिबद्ध उड़ीसा पुलिस के दस्ते की कमान संभाले एडिशनल एसपी मीनाक्षी ठाकुर। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर महाराष्ट्र पुलिस का दस्ता। अपने आदर्श वाक्य संरक्षणाय खल निग्रहणाय के साथ एकता परेड में देश की अखंडता, एकता और सुरक्षा के प्रति अपने अटूट समर्पण का संदेश देती। नेतृत्व संभाले डीएसपी सविता मारुति गर्जी। और अब सारे जहां से अच्छा की धुन बजाता आगे बढ़ता महाराष्ट्र पुलिस का बैंड मास्टर एएसआई अविनाश कामले। सलामी मंच की ओर अब आगे बढ़ रहे हैं केरला पुलिस। भारतवर्ष में प्रथम महिला पुलिस थाने की स्थापना कर महिला शक्ति को आगे बढ़ाने वाली केरला पुलिस अपने आदर्श वाक्य मृदु भावे दृढ़ कृत्य को चरितार्थ करती तथा अपनी जन मैत्री पुलिसिंग मॉडल के लिए विशेष पहचान रखती है। इस दस्ते की कमान संभाली है एएसपी डॉक्टर अपर्णा ओ आईपीएस ने। उत्तर पूर्वी राज्य त्रिपुरा की शांति, कानून व्यवस्था और जनता की सुरक्षा की सशक्त प्रहरी है त्रिपुरा पुलिस। दुर्गम और सीमावर्ती इलाकों में उग्रवादी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाली त्रिपुरा पुलिस के जवान एकता परेड में गर्व के साथ अग्रसर
अब सलामी मंच के समीप पहुंचता त्रिपुरा पुलिस का ये दस्ता कमान संभाली है डीएसपी दीपा देव वर्मा। हर दम अपना काम करे, जनहित का रखे ध्यान, ये धुन बजाता आगे बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस का बैंड। कमान संभाले है सब इंस्पेक्टर ललित मोहन। और अब विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म यूथ फोर्स राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी, जो भारत की विविधता और शक्ति को सही मायने में चरितार्थ करती है। युवा थल सैनिक, वायु सैनिक और नौ सैनिक एनसीसी कैडेट्स के दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं कैडेट सीनियर अंडर ऑफिसर मुस्तफिया कुरैशी। और देवियों तथा सज्जनों, माउंटेड कॉलम में अब सबसे आगे बीएसएफ का श्वान दस्ता नेतृत्व कर रही हैं डॉक्टर शेरिंग डिकेट, असिस्टेंट कमांडेंट वेटनरी। और जिप्सी पर सैल्यूट की मुद्रा में भारतीय नस्ल की श्वान रिया। देवियों तथा सज्जनों, ये सीमा सुरक्षा बल की वही भारतीय नस्ल की श्वान रिया है जिसने ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट 2024 में दुनिया के तमाम नस्ल के श्वानों को पीछे छोड़ते हुए राष्ट्रीय चैंपियन डॉग का खिताब हासिल किया। उल्लेखनीय है कि सीमा सुरक्षा बल ने अब तक 150 स्वदेशी डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया है। भारतीय नस्ल के इन श्वानों का खौफ तस्करों और घुसपैठियों के दिलों में दहशत बनकर छाया हुआ है। और अब गुजरात पुलिस का अश्वरोही दस्ता, इस दस्ते की कमान संभाली है 2022 बैच की युवा अधिकारी डीएसपी मनीषा देसाई गुजरात पुलिस ने, जो वर्तमान में बोटाद में तैनात है। उल्लेखनीय है कि गुजरात पुलिस की हॉर्स यूनिट देश के पुलिस बलों में सबसे बड़ी है, जिनकी संख्या 757 है। कानून व्यवस्था कायम रखनी हो या पेट्रोलिंग करते हुए लंबी गश्त लगानी हो, ऐसी हर परिस्थितियों में पुलिस बलों का सच्चा साथी होता है अश्व। और अब परेड में आगे बढ़ता बीएसएफ का कैमल कंटिंजेंट। इस दस्ते की कमान संभाली है श्री महेंद्र पाल सिंह राठौर, डिप्टी कमांडेंट ने। और इस समय अपने ऊंट चेतक पर सवार सीमा सुरक्षा बल के सजे धजे ये ऊंट सवार इस एकता पथ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ उपस्थित हम सभी को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। कैमल माउंटेड बैंड, भारत के हर प्रांत से आए बहादुरों का दल, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बीएसएफ का कैमल माउंटेड बैंड, जिसके बैंड मास्टर हैं इंस्पेक्टर अमोल चट्टोपाध्याय। देवियों तथा सज्जनों, ये सीमा सुरक्षा बल का वही कैमल माउंटेड बैंड है जो सारी दुनिया में अनोखा और अनूठा होने के साथ ही गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। और अब एकता परेड 2025 के इस अवसर पर गुजरात पुलिस और सीआरपीएफ की 101 महिला शक्ति द्वारा संयुक्त राइफल ड्रिल का प्रदर्शन। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सशक्त राष्ट्र के निर्माण में सशक्त महिलाओं के महत्व को सदा ही बढ़ावा दिया है। इस भावना को चरितार्थ करते हुए अनुशासन, समर्पण और वीरता की झलक प्रस्तुत करने जा रही हैं ये नारी शक्ति। इस राइफल ड्रिल का नेतृत्व कर रही है पुलिस इंस्पेक्टर डीएस गंभीर। बैंड का संचालन अनीता निवार द्वारा। इस प्रदर्शन को तैयार किया है डीएसपी विजय सिंह परमार गुजरात पुलिस तथा उप कमांडेंट सिंधु सीआरपीएफ ने।
भाइयों तथा सज्जनों, आज के सभी प्रदर्शनों में शौर्य है, संस्कृति है, भारतीय विरासत है और परंपराओं का समागम है। फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया जैसी योजनाओं के तहत पारंपरिक भारतीय खेलों का महत्व पुनर्जीवित हो उठा है और अब आप सभी के समक्ष CISF की महिला शक्ति द्वारा भारतवर्ष की प्राचीन युद्ध कलाओं का जीवंत प्रदर्शन, जिसमें मणिपुर का थांगटा साहस और शौर्य का मिसाल है। उत्तर भारत की लाठी कला आत्मरक्षा की प्रेरणा देती है। केरला का कलारीपयट्टू संतुलन और आत्मनियंत्रण सिखाता है। छऊ नृत्य कला और पराक्रम का संगम है। इन कलाओं के माध्यम से मैं शक्ति भी हूँ, मैं सुरक्षा भी हूँ का संदेश देती CISF की वीरांगनाएं। Hi.
देवियों तथा सज्जनों, एकता परेड के इस पावन अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति में आज भारतीय पुलिस बलों के सभी प्रदर्शन साहस, रोमांच और वीरता को अपने आप में समेटे हैं। आइए अब असम पुलिस द्वारा साहसिक प्रदर्शन में मिलते हैं असम पुलिस के दिलेर मोटरसाइकिल राइडर्स से, जिन्हें कहते हैं असम पुलिस पैंथर्स ऑन व्हील्स। सबसे पहला फॉर्मेशन वीर लचित फॉर्मेशन। 1671 में सराय घाट की लड़ाई में मुगलों को हराकर असम की रक्षा करने वाले महान योद्धा लाचित बोरफुकन, जिनके नाम से आज भी एनडीए द्वारा बेस्ट कैडेट को गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है। इस फॉर्मेशन का नेतृत्व कर रहे थे लॉन्स नायक परेश कलिता। हवलदार किशोर राय और 7 महिला सदस्यीय टीम के साथ अग्रसर ऑब्जर्वेशन फॉर्मेशन, जो यह प्रदर्शित कर रहा है कि भारतीय पुलिस के वीर जवान देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दिशा में सदैव प्रतिबद्ध है। और अब अगली फॉर्मेशन कनकलता फॉर्मेशन। असम की वीरांगना कनकलता बरुआ, जो 17 साल की उम्र में ब्रिटिश हुकूमत के आगे नहीं झुकी और तिरंगा थामे गोलियों का सामना करते हुए शहीद हो गई और ये संदेश दे गई कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती। लांस नायक सोनिया मिली और उनकी साथी प्रस्तुत कर रही थी कनकलता फॉर्मेशन। और अब प्रस्तुत है एकता फॉर्मेशन। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित एकता फॉर्मेशन। नेतृत्व कर रहे हैं लांस नायक संतोष बोरो और उनके साथी। विविधता में एकता, हिंद की विशेषता। और यह है हेड स्टैंड फॉर्मेशन यानी शीर्षासन। लांस नायक अरूप ज्योति चेतिया और सीएन दिगंता गोहेन द्वारा योगासन मुद्रा प्रस्तुत। संतुलन, एकाग्रता और अनुशासन का प्रतीक। फॉर्मेशन की श्रृंखला में अब भारत माता फॉर्मेशन। हवलदार राजकुमार कोनवार और उनके साथी प्रस्तुत कर रहे हैं भारत माता फॉर्मेशन, जिसमें हमारे देश की संस्कृति, शक्ति और एकता प्रतिबिंबित हो रही है। मां भारती के जयकारे के साथ ये जवान। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का अनआर्म्ड कॉम्बैट यानी बिना हथियार के युद्ध में विजय पाने की कला का प्रदर्शन, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं हेड कांस्टेबल पोंडरू राजू। हर प्रहार और हर कदम हमारे जवानों के अनुशासन, आत्मसंयम और अटूट निष्ठा का परिचायक है। इस प्रदर्शन में 36 पुरुष और 6 महिला योद्धा शामिल है, जो एकता और समावेशिता का सशक्त प्रतीक है। इस अदम्य बल का आदर्श वाक्य है सेवा और निष्ठा।
देवियों तथा सज्जनों, अब प्रस्तुत है सीमा सुरक्षा बल द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल के श्वानों का यह प्रदर्शन। उल्लेखनीय है 30 अगस्त सन 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात से निकले आह्वान को सीमा सुरक्षा बल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अपनाते हुए भारतीय नस्ल के डॉग्स को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करने का बीड़ा उठाया। इस दिशा में पहल करते हुए सीमा सुरक्षा बल अकादमी के राष्ट्रीय श्वान शिक्षण केंद्र ने मुख्य रूप से 2 भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रशिक्षण के लिए चुना, जिनमें उत्तर प्रदेश की नस्ल रामपुर हाउंड और कर्नाटक तथा महाराष्ट्र की नस्ल मुधोल हाउंड शामिल रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी की विचारधारा ने श्वान प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात किया और फलतः बीएसएफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा प्रक्रिया में इंडियन डॉग्स को प्रशिक्षित कर सीमाओं पर तैनात किया और ठीक 5 वर्ष बाद बीएसएफ द्वारा प्रशिक्षित भारतीय नस्ल का श्वान मुधोल हाउंड अखिल भारतीय स्तर पर चैंपियन बनकर यह सिद्ध कर दिया कि अगर हम अनुसंधान में निवेश करते हैं और अपनों पर भरोसा करते हैं तो भारत जीतता है, भारत विजयी होता है। आज एकता परेड के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष भारतीय नस्ल के श्वानों को प्रस्तुत करते हुए सीमा सुरक्षा बल गर्व से रोमांचित है। और सबसे पहले कॉम्बिनेशन जंप, इस कॉम्बिनेशन जंप को गजब की फुर्ती और तीव्रता के साथ पार करती 2024 की अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता की चैंपियन बीएसएफ की भारतीय नस्ल की श्वान रिया की यह छलांग नहीं बल्कि उड़ान है। उल्लेखनीय है कि रिया ने 116 से भी अधिक फॉरेन ब्रीड्स के डॉग्स को हराते हुए चैंपियनशिप का खिताब जीता। और अब कृपया दाहिने देखें। इवेंट नंबर 2, सीढ़ी पर जाबाजी। सीढ़ी पर जाबाजी करता भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान मोगली। यहां हम ये बताना जरूरी समझते हैं कि आज के सभी प्रदर्शन सीमा सुरक्षा बल की विभिन्न जिम्मेदारियों से जुड़े हैं, ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस यानी संक्रियात्मक महत्व पर आधारित हैं। सीढ़ी पर जाबाजी इस बात को प्रदर्शित करता है कि चाहे राहत एवं बचाव कार्यों में जीवन की सुरक्षा करनी हो या फिर किसी ऑपरेशन के दौरान सामान्य सीढ़ी के रास्ते चढ़कर अपने मिशन में कामयाब होना हो, हर ऐसी परिस्थिति के लिए बीएसएफ के ये स्वदेशी श्वान अब पूरी तरह तैयार हैं। बीएसएफ के इन प्रशिक्षित श्वानों ने अपने कार्य क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करते हुए यह सिद्ध किया है कि आज का भारत आत्मनिर्भर भारत है, जो हर दिशा में उत्कृष्टता की ओर अग्रसर है। 20 फुट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आप सभी की प्रशंसा को स्वीकार करता भारतीय नस्ल का ये श्वान। और अब यहाँ की खुशहाली और सुंदरता निहारने के बाद अब नीचे उतरता। उल्लेखनीय है कि प्रारंभ में इस तरह की प्रक्रिया में इन श्वानों को कई बार 2-2 घंटे तक का समय लग जाता था, परंतु आज पलक झपकते और कुछ ही पलों में इसे कर गुजरते हैं ये भारतीय नस्ल के श्वान, जो सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिणाम है। संतुलन के साथ नीचे उतरता ये भारतीय नस्ल का श्वान और सफलतापूर्वक इसने इसे पूरा किया। आइए हम तालियों से इसे सराहें। और अब इवेंट नंबर 3, मध्य में ठीक सामने 18 फुट की ऊंची दीवार। पलक मत झपकाइए, अन्यथा ये कब पार कर जाएगा पता नहीं चलेगा। और बहुत ही तीव्रता के साथ भारतीय नस्ल रामपुर हाउंड का श्वान दया सिर्फ तीव्रता ही नहीं, सहजता से अंजाम देकर भारतीय नस्ल की फुर्ती और तीव्रता प्रशंसनीय है। और अब इवेंट नंबर 4, मंच के दाहिनी ओर रस्सी का पुल। इस इवेंट से पहले हम इतना जरूर कहना चाहेंगे कि खुली आंखों से इस रस्सी के पुल को पार करना फिर भी आसान होगा, परंतु आंखों पर पट्टी बांधकर रस्सी के पुल को पार करना इस बात को प्रमाणित करता है कि अगर रात के अंधेरे में भी चलना हो, राहत एवं बचाव कार्यों के लिए जाना हो, तो अपने लक्ष्य तक पहुंचना हो, तो ये स्वदेशी श्वान सक्षम हैं, समर्थ हैं। सीमा सुरक्षा बल की उत्कृष्ट प्रशिक्षण प्रणाली की बदौलत आज ये श्वान अपने मिशन में कामयाब होने के कौशल सीख चुके हैं। और अब मंच की बाईं ओर कठिन डगर अडिग कदम, टेढ़े मेढ़े पहाड़ी नुमा रास्तों पर लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तैयार इंडियन ब्रीड रामपुर हाउंड की श्वान सुंदरी। कठिन राहें और चुनौतियों की दीवार भारतीय नस्ल के इन श्वानों के रास्ते की रुकावट नहीं बन सकती। स्वदेशी श्वानों ने अपनी क्षमता से यह सिद्ध किया कि पूर्वाग्रहों को तोड़ा जा सकता है और बाधाओं को पार किया जा सकता है।
बाईं ओर देखें, इवेंट नंबर 6 तीव्रता के साथ पलक झपकते टेंट पार करता ये बीएसएफ मुधोल हाउंड का ये डॉग राजा। यह प्रदर्शन भारतीय नस्ल के बारे में एक शक्तिशाली संदेश देता है कि ये ताकतवर हैं, फुर्तीले हैं, साहसी हैं। और एक बार फिर सामने देखिए, तीव्रता के साथ ऊंची छलांग, और इसी के साथ हमारे समक्ष सीमा सुरक्षा बल व भारतीय पुलिस बल का अभिवादन जय हिंद प्रदर्शित हुआ। देवियों तथा सज्जनों, भारतीय नस्ल के श्वानों को देश की सुरक्षा के लिए तैयार करके सीमा सुरक्षा बल ने वो पहल की है जो आत्मनिर्भर भारत के मिशन को और अधिक सशक्त करता है। और अब प्रस्तुतियों की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। एकता में शक्ति है, एकता से ही राष्ट्र है, राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ने के सामर्थ्य को ही कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगली प्रस्तुति एनसीसी कैडेट्स के द्वारा जो पूज्य सरदार पटेल के 150वीं वर्षगांठ का उत्सव अपने अनूठे अंदाज में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहते हैं कि सिरमौर मुकुट है भारत के मस्तक पर तिलक हमारे, युवाओं के दिलों की धड़कन, विकसित भारत के मार्गदर्शक, वो बने मशाल हमारे, एकता के सूत्रधार वो वल्लभ सरदार हमारे। ये केवल नृत्य ही नहीं बल्कि एकता का उत्सव और राष्ट्र निर्माण की अभिव्यक्ति है। लौह पुरुष के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि। और इस जोशीली प्रस्तुति को कोरियोग्राफ किया है पंडित मनीष पांडे ने। तो प्रस्तुत है वल्लभ सरदार हमारे। जो कर ना सको, कुछ ऐसा नहीं जो पा न सको। तुम उठ जाओ, तुम जुट जाओ, सामर्थ्य को अपने पहचानो, कर्तव्य को अपने सब जानो। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अपने भारत की वाणी है, अपने भारत की वाणी है, ये क्रांति है। ये विचार नहीं ये क्रांति है, अपने भारत की वाणी है, अपने भारत की वाणी है, ये क्रांति है। हम लोग पुरुष के पथगामी, हम लोग पुरुष के पथगामी, सबके मन में गूंजे ये नारे, सबके मन में गूंजे ये नारे। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। सिरमौर मुकुट है भारत के, मस्तक पर तिलक हमारे, आसमान में जैसे चमके सूरज चांद सितारे। सरदार युवाओं की वही समर्थ भुजाओं की, उनसे ही एकता के स्वर है, धरती डोले अंबर पुष्प हृदय विशाल भारत के लाल, सबकी आंखों के प्यारे। औलादी है लोग पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। भारत माँ के राज दुलारे, ये देश की खातिर जिसने कठिन से कठिन के प्रण सारे। उनके पद पर आज चले हम सब अपने पंख पसारे, एकता के सूत्रधार हो उम्मीदों के उजियारे। प्रखर तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी हिला डाले। प्रखर तेज थे देशभक्त वो युग शिल्पी थे निराले, कर्मवीर अपने निष्ठे से अंबर भी हिला डाले। खंड खंड भावों से जोड़े खंड माँ का चल सवारे। लोक पुरुष ने मातृभूमि मुकुट में सजा दिए सितारे। जिस भारत की राह चले वो बने मशाल हमारे। औलादी है लोक पुरुष, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे, वल्लभ सरदार हमारे। संस्कार
हैं रग रग में मन तेज पुण्य चमके जग में तन से कठोर मन मृदुभाषी चित शांत सहजता की राशि समझ सोच अद्भुत पाई सागर से ज्यादा गहराई तुम देशभक्त हो डटे लड़े अद्भुत विशाल आज भी खड़े वीर वीर गंभीर सत्य जो वृक्ष कोई हो फल से लगा ईमानदार कर्तव्य निष्ठ हृदय में बसते वन विशिष्ट है रोम रोम में देशभक्ति उतरी हो जैसे दिव्य शक्ति रखते हैं मानवता से मेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल ऐसे अपने वल्लभ पटेल औलादी है लोग पुरुष वल्लभ सरदार हमारे वल्लभ सरदार हमारे वल्लभ सरदार हमारे वल्लभ तेरी प्रेरणा वल्लभ तेरी प्रेरणा हम सबको राह दिखाए भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए भारत माँ के वीर को सारा जग ये शीश झुकाए हिमालय बना खड़ा है बलिदानों की घाटी पर हमसे बढ़कर देश हमारा गर्व हमें परिपाटी पर जन्म सदा ले भारत में हम मरे इसी की माटी पर भारत माँ की आरती गाए सब उनके ही जयकारे सब उनके ही जयकारे सब उनके ही जयकारे